Good afternoon, everyone. I hope you guys can see me and hear me. So, welcome everyone for the afternoon trading session. And I hope you guys are doing great. And अगर market अगर हम देखें, it's still flattish to negative Nifty, and Bank Nifty is gradually 5.5% upside. And उसी के बारे में to talk at depth about the market, what exactly it's trading, how it's trading, and how it will be going to be for tomorrow, since Friday market बंद रहेगा on the occasion of Holi, right? So let's see how it goes today and tomorrow as well, क्योंकि कल हमारा निफ्टी का एक्सपायरी होगा, right? And काफी कुछ स्टॉक्स में अच्छे खासे एक्शंस भी है, right? And काफी सारे न्यूज़ भी चल रहे हैं मार्केट में. lot of news are going around in the market as well. So to talk more about it, we have Arpit sir with us today for the session, and Arpit sir have already joined us. So Arpit sir, let me know if we can start the session. Yeah, Avinash, just a minute, I'm just setting up the frame. Before that, my screen is visible? Absolutely, sir. Your screen is visible, you are visible, you are audible as well. Okay, great. So we'll start the session. We are good to go. Great. You can start the session, sir. Over to you. Very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty Weekly Outlook. Starting with the flow for the session would be starting with the Nifty Bank Nifty Outlook, followed by the broader market, few BTST, STBT ideas, conviction delivery ideas, and overall market setup wise. मार्केट कैसा लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में, एंड हम क्या रेंज को प्ले कर सकते हैं. कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड है. Starting with that, today we have a lot of events also at the global front. We have CPI numbers, IIP numbers at India and US level. So a lot of data point is there. So first and foremost, starting with Nifty. निफ्टी का हम अगर चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पिछले वीक में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी. एंड पिछले 3 से 4 दिनों से निफ्टी की रेंज में ट्रेड कर रहा है. नीचे में 22,300 का सपोर्ट है, ऊपर में 22,650 700 का हर्डल है. काइंड ऑफ एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है डेली स्केल पे. बट अभी भी अगर सेटअप वाइज देखें तो मल्टीपल हर्डल्स है नियर अराउंड 22,600 लेवल्स, एंड नीचे में 22,300 333 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. वीकली स्केल पे प्राइस थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव है, बट डेली स्केल पे एक मिक्स है, बिकॉज इंडेक्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी चल रहा है. आज हमने फ्लैट ओपनिंग देखी, फिर इंट्राडे में एक शार्प करेक्शन देखा टुवर्ड्स 20 to 300 350 levels, and again we have seen recovery from lower levels, and this has been the setup of the market, especially in Nifty. अभी निफ्टी देखे तो हमने वापस 100 पॉइंट का हमने नीचे से कूल ऑफ देखा 22,350 से टुवर्ड्स 22,450 लेवल्स. एंड एक zigzag वे में ही निफ्टी स्पेशली बिहेव कर रहा है. कल रिलेटिवली निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था. आज निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है. तो निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें, निफ्टी की इमीडिएट रेंज है 22,222 से लेके ऊपर 22,700 की. जब तक निफ्टी इस रेंज में रहता है तब तक इंडेक्स एक मोर और लेस रेंज में रहेगा. स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही चलेगा. 22,222 से लेके 22,700, और पास में देखें तो 22,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 22,333, और ऊपर में 22,650. तो निफ्टी का हमारा व्यू है इस रेंज में ट्रेड करेगा, तब तक बायस वुड बी मिक्स. टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, तो अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वाइज कल हमने एक शार्प मूव डाउन टिक देखा था, मेनली बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द वीकनेस ऑफ इंडसइंड बैंक पोस्ट द अनाउंसमेंट ऑफ सम डिस्क्रिपेंसी ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो इंडसइंड बैंक कल ऑलमोस्ट 27% डाउन था, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टीपेस्ट फॉल इन लास्ट इन मेनी इयर्स पोस्ट कोविड. एंड बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का अगर वीकली सेटअप देखें, सो लेट मी ओपन अप द वीकली चार्ट. पिछले 7 से 8 हफ्तों से बैंक निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे 47,700 से लेके ऊपर 49,200 की रेंज में. वीकली स्केल पे अभी भी लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है. डेली स्केल पे आज लोअर हाइज को नेगेट किया है, मेनली बिकॉज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को कोटा होल्ड कर रहे हैं. एंड अगर आप ये देखिए, ब्यूटी ऑफ बैंक निफ्टी है बहुत स्मार्टली इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है. कभी किसी बैंक को नीचे रखा हुआ है जिसके सामने ऑफसेट करने के लिए तेजी तरह रखे हुए हैं. तो आज भी बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट ऊपर है, बट निफ्टी एंड ब्रॉडर मार्केट पेन में है. सो वेरी स्मार्ट, नो कोरिलेशन बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 2 days. सो लेवल्स के बारे में बात करें तो 47,750 बैंक निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट जोन है, ऊपर में 48,250 48,500 एक मेजर सप्लाई जोन है.
एंड आज भी सुबह से हम देखें तो 250 से 300 पॉइंट के रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। नीचे में 47,900 के वहां सपोर्ट ले रहा है, ऊपर में 48,200 के वहां पे थोड़ा सा सप्लाई है। सो सेटअप वाइज देखिए तो एचडीएफसी बैंक में कोटा में काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से काफी अच्छा मोमेंटम है बैंकिंग सेक्टर में। इसी के साथ हम देखें तो एक बीटीएससी हमारा फर्स्ट ट्रेड आया है, थोड़े से मार्केट में हमने नीचे से रिकवरी देखी तो फर्स्ट हमारा ट्रेड है एमसीएक्स। सो एमसीएक्स का हम चार्ट स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कल एक अच्छी रिकवरी हमने नीचे के लेवल से देखी थी। तो एमसीएक्स हमारा फर्स्ट बीटीएससी ट्रेड है, अभी 4780 चल रहा है, 4770 से 4780 के रेंज में बाय कर सकते हैं। 4720 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 4860 के टारगेट के लिए एमसीएक्स वुड बी अ फर्स्ट बीटीएससी ट्रेड। आई रिपीट, एमसीएक्स इज अ फर्स्ट बीटीएससी ट्रेड। डेली स्केल पे लो राइज को नेगेट किया है, नीचे से अच्छी रिकवरी देखी है, 4780-85 अभी चल रहा है। आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 4720 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 4850 4880 के लेवल्स के लिए। आई होप अविनाश द लेवल्स आर क्लियर फॉर द फर्स्ट बीटीएससी ट्रेड। Absolutely, sir. I will repeat once again the levels. So we have initiated a BTSC and MCX. Currently, it's trading near 478 levels, 83 levels, right? तो हमें current market price पे buy करना है with a stop loss of 4720, right? The target for the upside will be 4850 or 4880. Absolutely. So in continuation with our discussion, जैसे हमने बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे, so बैंक निफ्टी का चार्ट वाइज देखें तो आज पूरे बैंकिंग स्पेस में अगर मैं एक बार एक डीप डाइव करूं प्राइवेट बैंक्स के स्ट्रक्चर वाइज, एचडीएफसी बैंक आज स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, आज सुबह से मोमेंटम में है जिसके वजह से बैंक निफ्टी होल्ड किया हुआ है। सो एचडीएफसी बैंक रिलेटिवली बेटर है, बट एक सेटअप वाइज अगर हम देखें तो काफी टाइम से हम कोटक महिंद्रा बैंक पे बुलिश है। जनरली ये एक स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर हुआ कर रहा था, बट लास्ट 2 से 2.5 महीनों से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पूरे मार्केट की फॉल के बाद भी ये स्टॉक अब गिर नहीं रहा है और धीरे धीरे बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वीकली स्केल पे 4 से 5 हफ्ता कंसोलिडेट किया, रीटेस्ट किया है, ब्रेकआउट को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, फ्रेश रेंज ब्रेकआउट देने की तैयारी पे है। सो एक सीडीआई कॉल हमारा रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। सेटअप वाइज अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है, रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। सो कोटक महिंद्रा बैंक वुड बी अ फर्स्ट सीडीआई कॉल दैट इज फ्रॉम 5 days to 7 days पर्सपेक्टिव। 1970 से 1980 के रेंज में बाय कर सकते हैं, 1920 का स्टॉप लॉस रख के पर 2050 के टारगेट के लिए दैट वुड बी अ फर्स्ट सीडीआई कॉल फ्रॉम द प्राइवेट बैंक स्पेस। Avinash, you can note down the levels. So could you please repeat once again? The buying range will be 1970 to 1980, and what will be the stop target? Stop would be 1920 for an upside move towards 2050 levels. 2050. Yes. इसी के साथ हम देखें तो आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल्स एनबीएफसी से रिलेटेड आउट परफॉर्म कर रहे हैं और उसी में हम देखें बजाज फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर भी सो काफी रिलेटिवली बेटर है। लेट मी ओपन अप द चार्ट। या सो चार्ट वाइज अगर देखें तो मल्टी अपने मंथली ऑल टाइम हाई के पास में है, वीकली स्केल पे कंसोलिडेट कर रहा है और एक काफी अच्छे चैनल में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आती है और नीचे से वापस ट्रेड अपवर्ड होना शुरू हो जाता है बजाज फाइनेंस का। सो रेंज वाइज में नीचे में 8200 8100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ऊपर में 8600 700 का हर्डल जोन है। तो बजाज फाइनेंस का भी बायस वाइज ओवरऑल पॉजिटिव है एंड ऐसे चॉपी मार्केट में बेटर है कि आप सिलेक्टिव हेवीवेट्स के साथ जाइए जिसका बिगेस्ट टाइम स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। सो बजाज फाइनेंस आल्सो लुक्स गुड from the NBFC space, and slowly steadily we can see levels towards 8,500 8,800 levels also. So Bajaj Finance also is one of a serious call that looks very strong from few days perspective. From the private bank, Kotak Bank is the pick, and from the banking space, Bajaj Finance. I'll just give me a minute. I'll just wait some changes happening on the screen. Yeah, now it's fine. So Bajaj Finance की हम बात कर रहे थे 8,200 से लेके 8,800 की रेंज है। नीचे से वापस बार एक बार बाइंग आ जाती है, मंथली और वीकली सेटअप काफी स्ट्रांग है। सो फ्रॉम द एनबीएफसी स्पेस बजाज फाइनेंस वुड बी अनदर सीडीआई कॉल। 8,400 अभी 470 अभी चल रहा है, थोड़े से डिप पे 8,420 से 8,450 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 8,100 का स्टॉप लॉस रख के धीरे धीरे हमें 8,600 8,800 तक का मूव दिख सकता है अलग कुछ दिनों में।
कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक, अगर हम इसी के साथ देखें तो कल इंडसइंड बैंक और आज अगर देखो तो इंडसइंड बैंक हमने नीचे से रिकवरी देखी है, बट सेटअप वाइज अभी भी काफी वीक है, मंथली और वीकली सेटअप काफी वीक है, डेली में थोड़ी सी रिकवरी देखी है। एंड सच काउंटर्स गाइस ट्राई टू अवॉइड बॉटम फिशिंग। सो हमारा यही रहेगा कि अगर मूवमेंट आता है तो बेटर है आप प्राइवेट बैंक्स में जाइए, जैसे कि बेटर प्राइवेट जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, and avoid bottom fishing such counters because volatility काफी high है. Let the stock stabilize little bit, then only we can review it. In the meantime, volatility stock में रहेगी because काफी बड़ा movement हमने लास्ट 2 से 3 दिनों में देखा है. Now talking about overall mid cap space. So आज mid cap index भी सुबह से थोड़ा सा प्रेशर में था. It was not able to hold off at higher levels. ऊपर से हमने थोड़ा सा कूल ऑफ देखा, स्टॉक्स पे सेलिंग थी. नाउ सेकंड हाफ में हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी है, पर ओवरऑल बाइस देखे तो अभी भी एडवांस रेशियोज बेस के फेवर में है, जिसमें आपको सिलेक्टिव स्टॉक देखिए बहुत ही सिलेक्टिव रखनी होगी. मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों ही थोड़े से पेन में है, बट सिलेक्टिव स्टॉक्स में अभी भी बाइंग है. सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस एंड वी हैव टू बी राइट विद द सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स को प्ले आउट कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल आज आईटी इंडेक्स हैज बीन क्वाइट ब्रूटल. Almost 2.5-3% IT index is down. Stocks are down by more than 4 to 5% within the IT space. So it's very important to catch the right sector and then play it accordingly. Avinash, what we can do, we can take few of the stock queries in the meantime, and as soon as we get any option trades or the strategy based setup for tomorrow's expiry of any Bank Nifty setup, we'll update on that. Sure, Arpit sir. We'll take a couple of queries. Sir, Kotak Bank 1980 call bought at 35.5. What is your view and target for it? So I think Kotak Mahindra Bank, that was the first call that we started with our discussion. Setup is it's very positive. Slowly, steadily it is moving. Today the stock is up by 2%. But if you see the nature of the stock, it's a slow beta counter where the stock moves slowly, steadily by 1 to 2% on daily basis. So 1895, 2008 important level hai. Closing above this level can give further momentum towards 2020, 2050 levels. So continue to hold the call. जब तक 1950 के ऊपर है कोटक महिंद्रा बैंक, तब तक you hold the call because we still have 15 days to expiry. So आप call hold कर सकते हैं. Along with that, one more BTC call that we have flash on terminals and we added in the system also, that is JioFin. So आज काफी न्यूज हमारी रही है जियो रिगार्डिंग द भारतीज एंड द रिलायंस बिकॉज ऑफ न्यू पैक्ट विद डिफरेंट कंपनीज. तो जियो फिन भी चार्ट वाइज देखे तो नीचे से हमने अच्छा पुल बैक देखा है. कल हमने 210 200 वहां पे स्टेबल हुआ, आज थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट हुआ है. सो जियो फिन इज अ सेकंड बीटीएसटी आइडिया. 221 अभी चल रहा है, 217 के स्टॉपेज रख के ऊपर 232 के टारगेट निकले. जियो फाइनेंस में आप बीटीएसटी कर सकते हैं. फर्स्ट कॉल वाज सेंसेक्स, सेकंड इज जियो फिन. Coming back to Nifty, I'll pull out the intraday charts. It's a very lackluster move within that range itself. Second half, first half there was a good downtick, but post then slowly steady recovery हमने नीचे के लेवल से देखी है. एंड अगर हम डेली स्केल देखें तो पिछले 4 से 5 दिनों से निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 200 से 250 पॉइंट की रेंज में. हमें ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर चेंजेस. टुडे इट्स नॉट अ ट्रेंडिंग डे, but it is trading within a range where the buying is visible at the support levels, where at the same time supply pressure is seen at the higher zones. So you have to play it accordingly. The stocks we have discussed a lot of ideas. 2 serial calls, Kotak Bank and Bajaj Finance. Apart from that, 2 BTST calls, that is JioFin and Sensex. We can take few stock queries because as of now, looking at the index, Nifty, Bank Nifty, there is no major momentum on the option side. So there's nothing much about to give on the auction side so far. If we get any opportunity, we will love to share it with you guys. Also, we have RIP numbers, inflation CPI numbers on the US and the India front. So definitely tomorrow there could be some action. All the more we have expiry also. So definitely some things can be seen on the expiry day ahead of the long weekend. So coming back to, we can take few stock queries. Sure. Sir, there's a question from Amit ji, and मुझे लगता है काफी सारे लोगों का होगा, right? Since जब से हमारा expiry contracts बंद हो गया, right? So this question is, sir, why don't we give option trades in 230 sessions nowadays and only give on the expiry days but not on the non-expiry days? Okay. So the question is very valid. As things have changed in the last couple of months, since the time Bank Nifty has discontinued its weekly expiry of Nifty and BankX, a lot of dynamics have changed in last 3 to 4 months. If we see the average volatility, I'll talk about more particularly about Bank Nifty.
the average volatility of Bank Nifty has reduced considerably. So as we are discussing with the chart setup wise, Bank Nifty, in fact, in the last couple of days, though movement has been slow and steadily, Bank Nifty is just trading a range of 700 to 800 points. And if we see the setup wise, the intraday swing is very, very slow. And generally, option buying is for those where there is momentum in the market. Yeah, till Feb series, there was still momentum. Relatively, Bank Nifty has got stuck in a very range because of which the ATR, the average true range of the index, is very low, barely 200 to 250 points for that day. So it's very difficult to generate trades within that segment. But definitely, there is momentum. We would love to do that. Now, talking about Nifty or Sensex, as a Nifty, definitely we do give trades on the expiry day. But if you see the setup wise also, the market setup has been very much tricky. The last couple of weeks, the market setup has been very much tricky, in which within that day, from the positive side to the negative, from the negative to the positive, it has been swinging between that range itself. So to get the clear view, option buying is very important. But from last few days, the view on the index front gets tossed at many times because of stock specific action and the global factors. So buying setup wise, we're not getting many opportunities. Also, even if we give the view or the time frame will be very short lived because that is the range that is trading. And one of the major reason behind this is India VIX. If we see India VIX is at very low, though we have seen swings within the range, but India VIX is very low. That clearly indicates that momentum is missing. Having said that, if there is any momentum, we'll definitely love to share the trades. In fact, when there is no momentum, we try to come up with strategies also. So if we look at the setup wise on the Nifty or on the Bank Nifty, we would definitely love to share the trades. I hope Amit did this answer your queries, and also for the rest of the people who have the same query on it. I hope this answer your query. And as we are discussing geofinance at days high, so definitely, guys, there is momentum in stocks. So try to capitalize on that because index is broadly stuck in a range. But at least if there is momentum in stocks, let's take the most of it from the opportunity that we have. So Mahesh ji have a question that expecting 1% pullback in US market is the reason I bought call. Please share your view. You bought a call, but for which instrument? Exactly, Mahesh. Share index option trade, please, Mahesh ji. Please specify your question properly, or please write it, or could you please elaborate it, so we can take your query. So Kotak Bank, Surbhi ji, I guess we have already covered your query on Kotak Bank. Sir, please suggest. I already short Bharat Forge March futures at 1070 levels, and it's currently at 1092. What should I do? So looking at the chart setup wise, if you see the monthly trend of the stock has been clear downtrend last almost 7 to 7 months. Let me open up the chart on the monthly time frame. Yeah, so from last 7 to 8 months, the stock is completely forming lower and lower lows. If you see the setup wise, this month we have seen some recovery. Setup wise on the weekly scale also, if you see double one is a major hurdle zone. Let me put up the chart of the weekly chart. Yeah. So if we see the setup wise, वीकली में थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, but अभी भी अगर ट्रेंड वाइज देखें तो अभी भी स्टॉक बिगर ट्रेंड अभी भी पेन में है. अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो उसका डबल वन स्पॉट लेवल्स के हिसाब से उसको स्टॉप लॉस मेंटेन करें, दैट वुड बी बेटर. थोड़ा सा पुल बैक हमने देखा है बिकॉज मार्केट में थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में पुल बैक है, बट द बिगर ट्रेंड अभी भी पेन में है. डबल वन ऐसे रख के आप इसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं. उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, देन बेटर टू एग्जिट द स्टॉक. So what is your view on ITC 410 call bought at 7.6? So first and foremost, looking at the counter of ITC, the nature of the counter doesn't go for option buying because the counter is very, very slow. Having said that, it is turning from its crucial support zone on the weekly scale. So setup wise, yeah, the stock looks good. Closing above 414 will definitely slow and steadily move and see towards 420, 422 levels. But the setup wise, the ITC, the nature of the instrument is very slow. So अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि अगर मोमेंटम नहीं आएगा तो एग्जिट भी कर लीजिए. लेवल वाइज में 405 का स्टॉप लॉस रहेगा इमीडिएट बेसिस पे. ऊपर में 414 की क्लोजिंग के ऊपर 420 422 तक का मूव दिख सकता है आईटीसी में. Coming back to Bank Nifty, if I'll open up the intraday chart for Bank Nifty, since morning we have been trying to generate the option buying trade, but if we say
overall the bigger trend of the Bank Nifty is still under pressure. But however, today HDFC Bank is holding, because of which Bank Nifty is relatively outperforming as compared to the other indices. So अगर हम 15 मिनट का चार्ट भी देखें तो बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे 47,900 से लेके ऊपर 48,200 में, अभी 48,050 के अराउंड ट्रेड कर रहा है. So setup wise एक स्लो एंड स्टेडीली मूव है. जैसे हमने लेवल्स के बारे में बात किया, 47,750 मेजर सपोर्ट जोन है, ऊपर में 48,500 मेजर सप्लाई जोन है. जब तक ये डिसाइसिव के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है, तब तक इस रेंज में ही ट्रेड करेगा. एंड बेटर है कि अभी जो मूव्स है उसी को आप थोड़े थोड़े प्ले करें, एंड अगर नहीं मोमेंटम है सो रिफ्रेन फ्रॉम ऑप्शन बाइंग टिल द टाइम. Great. Sir, what is your view on 22,400 call bought at 110? Suggest stop loss and target for the same. 400 call. Yes, 22,400 call. Okay, first let me just look at the. I'll look at the chart of the call 22,400 call. Just give me a second. Sure. 22,400 call. What is the buying price, Avinash? Bought at 110. 110. To 400 call, bought at 110. Okay, so if you see the setup wise, अभी 115 114 के अराउंड चल रहा है. इसका लो है अराउंड 42 का. कल के एक्सपायरी का बाई किया हुआ है. सो हमारा व्यू रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी 22,400 के ऊपर क्लोज देता है तब तक बाइस भी पॉजिटिव, बट इसमें हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए. वो स्टॉप लॉस रहेगा 80 के लेवल का. 80 वो इंपॉर्टेंट लेवल, जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है. आप 24,400 का कॉल का 80 का लेवल आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें. कल का ही कॉल है, सो आपको इंपॉर्टेंट है मेंटेन रखना. 80 वुड बी इंपॉर्टेंट लेवल. अपसाइड में 140 एंड 165 वुड बी द हर्डल्स. So Arpit sir, we have just addressed the query on Bharat Forge. So Praveen ji just wanted to confirm once again that Bharat Forge 1111 is spot price or future price? I'm talking about is the spot price, because that would be easier for you guys to remember the values of spot price. I'm talking about the spot levels. Great. And as we are discussing, both BTC calls are inching slowly, steadily higher. MCX and GeoFin, good momentum is seen in both the stocks. So guys, try to capitalize on that. Try to make the most from it. As market from last couple of months has been quite tricky, quite choppy, quite negative. But definitely there is some opportunity every day that we have. And we as analysts, our main agenda is to try to find out few trades that make the most of it. तो BTC कॉल्स हमारे ऑलरेडी ओपन है. इंडेक्स बैंक निफ्टी का हमने व्यू शेयर किया है. couple of events are lined up for today. The macro data followed by we have a long weekend ahead, so please play it accordingly. हमने निफ्टी के लेवल्स की भी बारे में बात की, कॉल के बारे में बात किया है. आज 22,400 के ऊपर क्लोजिंग निफ्टी की इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम 24,600 एक सप्लाई जोन है, हर्डल जोन है. बैंक निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है 47,750 से लेकर ऊपर 48,250. Selective banking NBFC stocks are looking strong. थोड़े से स्टॉक्स में पुल बैक मूव है, so try to play that pull back move. जो स्टॉक्स बहुत बड़े करेक्ट हो गए हैं 15 से 20, 25, 30% without any reason or due to some reason, wait for any stability. Don't try to bottom fish. Go with heavyweights, especially in such markets में जब मार्केट काफी ट्रिकी है, काफी चॉपी है, heavyweights में रहेगा. And we have to always keep risk in mind. That is very much important because risk हमारे हाथ में, रिटर्न हमेशा मार्केट देता है. As we are discussing, we can take a couple of more stock queries, Avinash, and then accordingly we can close out the session. So Mahesh ji have a query, and I guess Mahesh ji is definitely have a good sort of knowledge into trading and everything. So yes, Mahesh ji, I would take your query. So 22,500, 1.5 crore call writers, but chances are too high to trap them, and market move towards 22,600. Can I hold 22,400 call with stop loss 17 for tomorrow? Yes, generally, as per our past experience, we don't recommend avoid holding naked option buying for overnight session, because we really don't know what the market has been, and now ongoing Trump issues or global issues or some other issues. Definitely, there is a whipsaw that is every day happening.
Having said that, looking at the chart wise and the price setup wise and the data wise, 22,333 is an important support zone for Nifty immediate basis pay. And at the same time, 22,500 as per the option data, as rightly mentioned, that's a key hurdle. So what I would suggest, even if you want to carry the option, try avoid carrying in the money option and better to buy with the at the money option in which your risk will be reduced and the chances of loss will also definitely reduce. सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन कैरी ही करना है 22,400 को शिफ्ट करके आप 22,450 का कॉल बाय कर सकते हो, जिसमें आपकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, रिस्क एलिमेंट भी कम हो जाएगा। एंड अगर नहीं नेकर ऑप्शन कैरी करने का कन्विक्शन आ रहा है तो सिंपल है, आप बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू प्ले कर सकते हो, जिसमें 22,450 का कॉल बाय करके ऊपर 22,550 का कॉल सेल कर दोगे, 30 से 35 पॉइंट की कॉस्टिंग रहेगी और आपका रिवॉर्ड 60 to 65 रहेगा। That would be the most advisable advice from our side that we can do for tomorrow's expiry. So, guys, since we are near the end of the session, we will take two more queries. And Arpit sir, before we move ahead with the queries, do we have any trade for today that we can hold till tomorrow, since tomorrow is a Nifty expiry? Yeah, actually, I was just looking at the setup only, but honestly, if you see the setup wise, Nifty is trading in a very narrow range between 200 points. So overnight, we would advise if someone wants to go, we can go with the spread as we have mentioned about the bull call spread that we can still go for. But the best way is to avoid any strategy or make it option on the voluntary basis for index. Better tomorrow, as per the market setup wise, try to do it on the intraday basis. That would be much more fruitful. Especially for Nifty because we have expiry tomorrow. For Bank Nifty, our view is mixed and it's likely to be in a range. So when there is no major trade setup from the Bank Nifty front. For the Nifty also, our suggestion would be better as for the market setup is on the tomorrow's opening thing. Better to play it accordingly. Levels हमने share करके 22,333 और ऊपर में 22,600 ये immediately Nifty के levels रहेंगे. Play the upside and the downside. Great. So we'll take this query. So ये query हम जो stock का है, we take it in every session Zomato. So Karishma ji bought Zomato at 251. Is it the right time to average now since it's 251? Okay. Yes. So looking at the setup wise, broadly Zomato is trading in a broader channel. On the downside, 200 एक major support है, ऊपर में 240 का hurdle zone है. पिछले 3 से 4 दिन हमने गिरावट देखी है स्टॉक में, लोअर हाइस बना रहा है, अभी भी मेजर रिवर्सल नहीं है, बट एक मेजर सपोर्ट जोन के पास में आज का दिन आप जाने दीजिए, कल वापस 205 208 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप एवरेज कर सकते हैं। सो बिगर ट्रेड द स्टॉक अभी भी एक रेंज में है, कोई बहुत खराब नहीं है, सो आप एवरेज कर सकते हैं 208 के ऊपर, उसमें स्टॉप लॉस आपको मेंटेन होगा 198 का, धीरे धीरे वापस 222 225 तक का मूव दिख सकता है आने वाले कुछ दिन। Great. So this will be the last query, guys, for today. From Anil ji, Aegis log quantity at 50 quantity at 76 at hold or exit. Aegis Logistics. Yes, Aegis Logistics. What is the buying price? 768. 768. So setup wise, if we see Aegis Logistics overall, it has got stuck in a range. Mid cap, small cap stocks में काफी हमने पेन देखा था. So levels wise में हम देखें तो 670 680 major support zone है, ऊपर में 777 एक major hurdle zone है. Setup wise nothing great. 777 के ऊपर ही फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा, तब तक स्टॉक रेंज में रहेगा। अगर आपने पोजीशन होल्ड करके रखी होगी तो आप इमीडिएट बेसिस पे 690 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 777 तक का मूव आता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। फ्रेश मोमेंटम 777 की क्लोजिंग के ऊपर ही रहेगा। Great, then I guess that's it from our end. We have covered almost all the queries that we had today, and we have already shared 2 BTST ideas today and 1 delivery idea. So I would repeat once again, the BTST idea was on MCX and the another was on Geo Financials, right? And we had shared 2 convictions idea. One was on Kotak Mahindra Bank and another was on Bajaj Finance, right? ये सारा trade हमने chat box में guys share किया and it's pinned as well. So yes, that's it guys from our end. Thank you so much for joining, and yes, thank you so much Arpit sir for giving 4 trades I would say for today. Since we were not able to capture the option trade considering market बहुत एक narrow range में trade कर रहा था, right? But yes, we will definitely try guys to make it up tomorrow since we have our Nifty expiry tomorrow. So yes, that's it guys from our end. Thank you so much guys for joining. Thank you so much Arpit. Thank you all.